Hello, this is Indian Polity series presented by me, Rahul Das, and this lecture is on a current affairs topic, the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017. This is a very important bill which is currently in news and which has not yet been passed by the Parliament. और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे किसी भी लेक्चर की पीपीटीज चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल पोस्ट कर सकते हैं. आई विल मेल यू द पीपीटीज. सो लेट्स स्टार्ट आवर today's lecture. So topics of discussion, these are the topics of discussion. What is Financial Resolution and Deposit Insurance, in short FIDI Bill 2017. तो ये बिल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Then we will see what are the provisions of the bill. इस बिल के कुछ important provisions को भी डिस्कस करेंगे. Then what is the issue of bail-in all about. So ये जो important topic है ये अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी है. इस पर्टिकुलर bail-in इशू से रिलेटेड है controversy. So we will see what this issue is all about, and after that conclusion. So our first topic is what is FIDI Bill 2017. So what is FIDI Bill 2017? See, the FIDI Bill seeks to create a framework for resolving bankruptcy in banks, insurance companies and other financial establishments. So ये जो बिल है इसका जो फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा रहा है, इसे क्रिएट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व बैंकरप्सी इन बैंक्स. बैंक्स अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए. देन इंश्योरेंस कंपनीज अगर बैंकरप्ट हो जाती हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, या फिर अदर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर बैंकरप्ट हो जाते तो उसे उनके इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए. सो the issues relating to all the financial establishments will be resolved after the bill is passed by the Parliament. Now, while the Insolvency and Bankruptcy Code deals with the corporations that have taken money from the banks but are unable to pay back, the FIDI bill outlines how the insolvency of a financial intermediary, that is banks, non-banks and even insurance firms, can be tackled. So अगर हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की बात करें तो वो डील करते हैं विद द कॉरपोरेशंस. जो कॉरपोरेशंस है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है और वो बैंकरप्ट अगर हो जाते हैं तो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ऑलरेडी बना दिया गया है. बट जो बैंक्स हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंश्योरेंस फर्म्स हो गए, वो अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए ये FIDI बिल को जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है. इसी विंटर सेशन में इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. और इस FIDI बिल इम्पोर्टेंट क्यों है इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे इफ एन FMCG कंपनी, FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, howsoever big, were to fail today, the impact would solely be on the creditors and it can be easily contained. But if SBI or LIC or the BSE, that is Bombay Stock Exchange, were to fail, the impact would be disastrous and we need a separate law to contain insolvency of financial institutions. So banks या फिर insurance firms या फिर stock exchanges अगर फेल हो जाते हैं तो अगर उनके फेल होने से जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत डिजास्ट्रस होगा. तो उनको कंटेन करने के लिए, उनके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक अलग इंसॉल्वेंसी कोड लाने की ज़रूरत है, जो कि FIDI बिल के थ्रू हम गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं. Then the need for such a regulation stemmed from the 2008 global financial crisis, which killed iconic US investment bank Lehman Brothers holding
incorporated and brought many large financial intermediaries to their knees, forcing large-scale bailouts by governments. So ये जो FIDI बिल लाने की ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्योंकि 2008 में आप सभी को पता होगा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके वजह से जो US का इन्वेस्टमेंट बैंक है Lehman Brothers Holding Incorporation, वो क्राइसिस में चला गया था। और इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए US गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी, उन्हें बेल आउट पैकेज इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और टैक्स पेयर्स का मनी यूज़ करके इन फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर का मनी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाता है। सो दिस इज़ अबाउट FIDI bill. So the next topic we will discuss will be what are the provisions of the bill. तो अब हम देख लेते हैं कि इस बिल के क्या क्या important provisions हैं। So provision number 1, resolution corporation, बहुत important है। The central government will establish a resolution corporation. The corporation will have a chairperson and its members will include representatives from the finance ministry, RBI and SEBI among others. So according to this bill, the central government will establish a resolution corporation which will have a chairperson and its members will include representatives from finance ministry, RBI and SEBI among others. And the second thing about resolution corporation is the proposed corporation will closely monitor financial companies. तो जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसे वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगी ये रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन, एंड क्लासीफाई देम इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्क प्रोफाइल्स एंड स्टेप इन टू रिजॉल्व इन केस ऑफ अ फेलियर, एंड दिस कुड आल्सो मीन टेकिंग ओवर अ फाइनेंशियल कंपनी। सो वो पहले तो बहुत काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे फाइनेंशियल कंपनीज को, then resolution corporation will also classify them in accordance with their risk, कि कौन से फाइनेंशियल कंपनी की रिस्क कितनी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिस्की है, और अगर वो फेल हो जाती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी स्टेप्स लिया जाएगा। और इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि उस फाइनेंशियल कंपनी को ओवरटेक कर लिया जाए। देन व्हाट इज द एग्जिस्टिंग मेथड, अभी प्रेजेंट में क्या मेथड है। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई फेल हो जाती है, अगर बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया जा रहा है, अभी प्रेजेंटली क्या यूज़ किया जा रहा है। While India never had such a resolution authority before, the Reserve Bank and the IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, were handling these functions for the banking and insurance sectors. So रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन से पहले, मतलब अभी तो रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन आया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल जो ये फंक्शन है रेजोल्यूशन का वो परफॉर्म करती है रिजर्व बैंक, बैंक्स के लिए, और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDAI। So the RBI in the past had asked PSU banks to take over stressed banks in order to protect the depositors and employees. So past में जब भी RBI को ऐसा फील हुआ है कि कोई PSU बैंक अगर फेल हो रही है, तो RBI ने एक स्ट्रॉन्ग PSU बैंक को कहा है कि वो उस वीक PSU बैंक को या फिर और भी नॉन PSU बैंक को वो टेक ओवर कर ले, ताकि उस बैंक के, जो बैंक फेल हो रहा था, उस बैंक के डिपॉजिटर्स और उनके एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट किया जा सके। Then the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, that is DICGC, an RBI subsidiary established in 1978, insures all kinds of bank deposits up to a limit of rupees 1 lakh. In case a stressed bank had to be liquidated, the depositors would be paid through DICGC. So अभी एक कॉर्पोरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। वो एक RBI की एक सब्सिडियरी है और इसे 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट इंश्योर्स ऑल काइंड्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, और ये हर तरीके की बैंक डिपॉजिट को इंश्योर करती है, बट अप टू अ लिमिट ऑफ रुपीज 1 लाख ओनली।
सो आपका अगर बैंक में 2 लाख रुपया जमा है, तो अगर वो बैंक फेल हो जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज ही रिटर्न में मिलेगा. In case a stressed bank had to be liquidated, the depositors would be paid through DICGC. However, the proposed bill seeks closure of the DICGC, as the credit guarantee will be taken care of by the Resolution Corporation itself. But by this proposed bill, the government wants to close this DICGC as the credit guarantee will be taken care of by the Resolution Corporation itself. So the next provision of the bill is risk-based classification. So on the basis of risks, financial institutions have been classified. The corporation, in consultation with the respective regulators, example RBI for banks and IRDA for insurance companies, specify criteria for classifying service providers based on their risk of failure. तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिस्क होने का कितना चांस है, फेल होने का कितना चांस है, उसे क्लासिफाई किया गया है लो, मॉडरेट, मटीरियल, इमिनेंट और क्रिटिकल कैटेगरीज में. नाउ लो कैटेगरी का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो है सब्सटैंशियली लो, सब्सटैंशियली बिलो एक्सेप्टेबल लेवल्स. सो जिस भी फाइनेंशियल कंपनी का कैटेगरी लो है, इसका मतलब है कि वो अच्छी अभी वो फेलियर के अभी लेवल पे नहीं आई है. सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज सब्सटैंशियली बिलो एक्सेप्टेबल लेवल्स. नाउ a financial institution which has been ranked as moderate is marginally below acceptable levels. Its profitability of failure is marginally below acceptable levels. And whose rank is material, its profitability of failure is above acceptable levels. And those who are ranked imminent, its profitability of failure is substantially above acceptable levels. And those who are categorized as critical, their profitability of failure is that service provider on the verge of failure. Means the service provider, either it is a insurance company or a bank, is on the verge of failure. So this is one important provision of the bill, risk-based classification. Then the next provision is resolution. So how will the Resolution Corporation resolve the issue? The corporation will undertake resolution of a service provider classified under the critical category using options which include. So जो resolution corporation है वो उन financial institution को resolve करने का कोशिश करेगा जिसको उसने critical category में रखा है. और रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन कुछ ऑप्शंस को यूज कर सकता है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे ट्रांसफर ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू अनदर पर्सन, किसी एक अलग पर्सन को उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना. नंबर 2 मर्जर और एक्विजिशन, मर्ज कर देना और अक्वायर करना है. नंबर 3 लिक्विडेशन अमंग अदर. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स इन विच द रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन वांट्स टू और will try to resolve the issue of the financial institution, failing financial institution. So this was the third provision. Now the next provision is administration. The corporation will take over the management, obviously, of the service provider from the date when it is classified as critical. So उस date से जब उस financial institution को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है, जिस दिन से उसे क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया उस दिन से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट है वो आ जाएगा कॉर्पोरेशन के पास, दैट इज रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन के पास. फिफ्थ प्रोविजन इज टाइम लिमिट. सो देयर इज टाइम लिमिट ओवर in which the resolution should be completed. The resolution process will be completed within a year from the date when a service provider is classified as critical. So एक साल के अंदर में resolve कर लिया जाएगा इशू को. This time limit may be extended by another year. तो एक साल के लिए इस time limit को extend भी किया जा सकता है. That is, there is a maximum limit of 2 years to resolve the issue.
Now the service provider will be liquidated if its resolution is not completed during this time period. और इस 2 साल के पीरियड में भी अगर resolution complete नहीं होता है, then it will be liquidated. The service provider or the financial institution will be liquidated. Now the 6th provision of the bill says liquidation and distribution of assets. The corporation will require the approval of the National Company Law Tribunal to liquidate the assets of a service provider. So corporation को National Company Law Tribunal का approval लेना पड़ेगा अगर वो उस financial institution, failing financial institution के assets को अगर liquidate करना चाहती है तो. Now the proceeds from the sale of assets और उस assets को sale करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा will be distributed in the following priority order. So वो distribute कर दिया जाएगा इस priority order में. ये पूरा order wise ही यहाँ पे सारे नाम को order wise ही दिया गया है यहाँ पे. So firstly, amount paid by corporation as deposit insurance to insured depositors. So first of all, they will receive the amount which has been gained after liquidating the assets. After that, the resolution cost will be paid. Then workman dues for 24 months and secured creditors will get paid. Then wages to employees for 12 months. So 12 months wages of employees will be paid. Then amount to uninsured depositors and other insurance related amounts. Then unsecured creditors will be paid. Then government dues and remaining secured creditors will get the payment, and after that remaining debt and dues, and last of all will be the shareholders. So shareholders will receive after all these parties have been paid. So this was about liquidation and distribution assets provision of the bill. Next we will see the 7th provision, which is offences. So the bill specifies penalties for offences such as concealment of property and destruction or falsification of evidence, and penalties vary based on the nature of the offence, with the maximum penalty being imprisonment for 5 years along with a fine. So bill में penalty का भी provision है कि अगर कोई failing financial institution किसी भी अपने property को conceal करने की कोशिश करती है या फिर फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है या फिर एविडेंस को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, तो उस केस में पेनाल्टी फेस करना पड़ सकता है. और इस पेनाल्टी का नेचर क्या होगा? इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 5 years imprisonment along with a fine. So these were some of the provisions of the bill. Resolution corporation, then risk-based classification, then resolution, then administration, time limit, liquidation and distribution of assets, and offences. Now let's come to our next topic, which is what is the issue of bail-in all about. तो ये जो bail-in का जो issue है ये है क्या आखिर जिसके वजह से इतनी ज़्यादा controversy हो रही है इस बिल को लेकर. Now the bill empowers the corporation to bail in a failing financial company. तो बिल जो है वो रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को एम्पावर करती है कि वो इस फाइनेंशियल कंपनी को बेल इन कर सकता है. अभी बेल इन है क्या? अ बेल इन इन्वॉल्व्स रेस्क्यूइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर बाय मेकिंग इट्स क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिटर्स टेक अ लॉस ऑन देयर होल्डिंग्स. तो बेल इन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर है तो वो रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्रेडिटर्स या फिर डिपॉजिटर्स को भी कह सकता है कि आप भी थोड़ा सा लॉस बियर कीजिए इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेलिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लॉस को. इट इज द ऑपोजिट ऑफ अ बेल आउट, और ये बेल आउट का बिल्कुल ऑपोजिट है. बेल आउट में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द रेस्क्यू ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, कि बाहर से कोई इसमें पैसा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है. बेल आउट पैकेज जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट बेल आउट करती हैं अभी बैंक्स को. रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा जो है वो प्रोवाइड किया है बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए.
सो बाहर से अगर पैसा आता है, टैक्स पेयर्स का अगर पैसा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर पैसा आता है, तो उसे हम कहते हैं बेल आउट पैकेज। और बेल इन का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिटर्स आर विद इन द इंस्टीट्यूशन, सो मनी विल कम फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स। दिस इज बेल इन। एंड बेल आउट का मतलब है एक्सटर्नल एजेंसी से पैसा आना। Now, in other words, instead of government rescuing a failing bank or any other financial intermediary by infusing capital, depositors' fund are being proposed to be used for this purpose. So, इस failing financial institution को के issues को resolve करने के लिए depositors' fund को इस्तेमाल किया जाने की बात की जा रही है इस बिल में, जिसके वजह से बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि डिपॉजिटर्स का ये मानना है कि उनका पैसा अब शायद सेफ नहीं रहेगा बैंकों में, क्योंकि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उनका पैसा भी जो है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस सेकेंड पॉइंट में देखा था। नाउ बट इस बेल इन इशू से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है डिपॉजिटर्स को, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने, और अगर इस बिल को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि किन लोगों, किन क्रेडिटर्स को या फिर किन डिपॉजिटर्स के मनी को यूज़ किया जाएगा। ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स लायबिलिटी विल बी बिल्ड इन। सो कौन से डिपॉजिटर या फिर क्रेडिटर का जो लायबिलिटी है वो बिल्ड इन किया जाएगा। द बिल मेक्स इट एक्सप्लिसिटली क्लियर दैट ओनली सच लायबिलिटीज मे बी कैंसल्ड वेयर द लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अ बेल इन प्रोविजन। तो सिर्फ उन्हीं लायबिलिटीज को कैंसिल किया जाएगा जिस लायबिलिटी में ये बेल इन का प्रोविजन पहले से मेंशन किया है। अगर पहले से मेंशन नहीं किया गया है उस लायबिलिटी में तो इसे तो उन डिपॉजिटर्स और उन क्रेडिटर्स का मनी को बेल इन नहीं किया जाएगा, यानी दे आर सेफ, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। नाउ इट मेक्स इट एबंडेंटली क्लियर दैट द रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन विल स्पेसिफाई द लायबिलिटीज टू बी बेल्ड इन। और इस बिल में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है जो रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन है, ये जो भी लायबिलिटी को बेल इन किया जा रहा है उसे वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। देन क्रेडिटर्स डिपॉजिटर्स विल नीड टू कंसेंट इन एडवांस टू हैव देयर लायबिलिटीज बेल्ड इन। और क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स जिनके लायबिलिटी को बेल्ड इन किया जा रहा है उनका कंसेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दिस बिल। सो ऐसा नहीं है कि आपसे बिना पूछे या फिर क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स से बिना पूछे उनकी लायबिलिटीज को कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहले से उनके कॉन्ट्रैक्ट में बैंक के साथ अगर डिपॉजिटर या फिर क्रेडिटर का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके लायबिलिटी को, आपके मनी को हम यूज़ कर सकते हैं इन द केस ऑफ आवर फेलियर या फिर बेल इन कर सकते हैं, तो ही ड्यूरिंग द टर्म ऑफ फेलियर उनके लायबिलिटी को कैंसिल किया जा सकता है या फिर उनके पैसे को बेल इन किया जा सकता है, लायबिलिटी को बेल इन किया जा सकता है। वरना all other creditors and depositors are completely safe and they need not worry at all. Now, conclusion: the bill establishes the Resolution Corporation to monitor financial firms such as banks, insurance companies, stock exchanges, and depositories, preempt their failure and resolve or liquidate them in case of failure. Failure of these financial firms may impact financial stability as they hold consumer deposits, extend credit, facilitate investment in the economy, and also borrow from each other. That is why it is very important to resolve the issues of failing financial institutions and to help them liquidate in case of failure. Therefore, the Resolution Corporation may have to exercise its powers with urgency and address such a failure to avoid any risk to the financial system. So, in this lecture, we discussed the
FIDI बिल 2017, ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, सो लेट्स सी क्या होता है. Though it is a very important bill, but there are some certain issues which needs to be resolved by the government. For example, the issues related to bail-in package. Depositors are very uh, uh, they are very afraid of this bail-in issue, of this bail-in provision. So the government needs to build confidence among the depositors, among the creditors of the bank. So thank you. Do share, like, and comment. For other study materials, follow my Facebook page. Thank you so much. Have a nice day.